उस टाइम में, जैसे आप बता रहे हैं कि आप अपने आप को बता रहे थे कि आई हैव कैंसर, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है, इंसान यकीन नहीं कर पाता इतना इजीली। तो उस वक्त आपको क्या लगता है कि आपने किस तरह, वो क्या चीज़ थी जिसने आपको कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेने पर या उस पर आमादा किया, किस चीज़ ने आपको कंटिन्यू करने पर इंस्पायर किया? असल में हुआ ये था कि लाइक आई टोल्ड यू, आई वाज डायग्नोस्ड इन दिसंबर 21। अक्टूबर फर्स्ट वीक 21 में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ सिरोसिस कैंसर। अब मैं आई नेवर हैड द गट टू टेल माय वाइफ के नाउ यू लॉस्ट योर फादर बिकॉज ऑफ कैंसर, और नाउ योर हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। हम्म। आई वाज रियली, आई मीन, आई वाज इन सच अ स्टेट के हाउ आई एम गोना टेल हर। हम्म। फिर आई नेवर हैड द गट्स टू टेल माय मदर, आई बीइंग द ओनली सन। तो 2 दिन तक मैंने किसी को नहीं बताया था। नोबडी इन माय फैमिली, नोबडी न्यू अदर देन मी, नोबडी न्यू के आई हैव कैंसर। फिर आई टोल्ड माय सिस्टर, आई हैव वन यंगर सिस्टर, शी हैज ऑलवेज stood with me like I mean, वो आई कॉल हर मेरा भाई, आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर। और her father in law is a doctor, he's a professor, he teaches. I sent her my reports and I specifically told her not to tell anyone, and especially not to tell Ammi. I said, keep it to yourself, show it to your father-in-law, and ask him what to do next. और फिर नेक्स्ट डे जो है वो माय मदर, अब माँ माँ होती है तो शी वॉज ऑब्जर्विंग टू मच, आई वॉज वेरी क्वाइट और काइंड ऑफ ऑक्यूपाइड, काइंड ऑफ क्या, बल्कि आई वॉज ऑक्यूपाइड। आई मीन ऑल द नेगेटिविटी एंड ऑल द बैड थॉट्स वर कमिंग इन, ओके भाई, ले भाई बंदे, तेरा टाइम आ गया, तू गया। तो she came along, or she was also quiet, or I mean, the eyes were saying everything, but we were not speaking. So my mother, she didn't ask me. She asked her के पंजाबी में बोली कि मैंने दसो की होया, हसन नु की होया। Then my sister told her, और आपने पूछा कि मुझे इंस्पायर क्या किया। सबसे पहले अल्फाज जो मेरी माँ के थे वो ये थे कि तू फिक्र ना कर, तूने बिल्कुल ठीक हो जाना है, तू फिक्र ना कर, खुद पे तरस नहीं खाना है, और तू बस, तूने ठीक होना है। और मेरी बहन ने मुझे कहा कि यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, यू हैव टू यू हैव टू कम अप, यू कांट गिव अप, यू हैव टू फाइट, देयर इज नो अदर चॉइस फॉर यू। और उस मेरी माँ और मेरी बहन के बाद दो लोग और, मेरी माय वाइफ एंड माय सन वाज, द टाइम वाज 17, और both of them came up to me or said ke my wife, I mean, she wasn't able to say anything, she was just crying, ke she didn't know what to do. My son came up and said, Dad, मुझे he calls me यार पापा, he said कि यार पापा, don't worry, uh, सब ठीक हो जाएगा, आई एम विद यू, डोंट वरी, आई एम विद। ये आप यकीन, फिजा, आप यकीन करो कि ये जो चंद जुमले हैं ना, मैंने ना कहीं पे आज से 24 साल पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि बी अ स्पार्क ऑफ लाइट इन समवन्स डार्क वर्ल्ड। मुझे तब इस चीज की, मुझे इस जुमले की तब समझ नहीं आई थी, मुझे अच्छा लगा था तो मुझे याद रह गया। जब मैं इस चीज, जब इस ट्रॉमा में आया, फिर मुझे समझ आया कि इस जुमले का मतलब क्या है। आई रिकॉल्ड इट, और दे वर अ स्पार्क ऑफ लाइट इन माई डार्क वर्ल्ड, कि मैं एट दैट टाइम मैं, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, और दीज वर द पीपल कि जिन्होंने, दे गेव मी अ रीजन टू फाइट, माई फैमिली, माई लव्ड वंस, माई कॉलीग्स, आई मीन, देयर आर सो मेनी नेम्स जो अगर मैं लेने बैठूं तो, अगर मैं बताना शुरू करूं तो मैं, इट वुड टेक आवर्स एंड आवर्स। तो लेकिन द वेरी फर्स्ट
people who gave me the strength. अल्लाह के बाद सबसे पहले अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह के बाद मेरे घर वाले, they were the inspiration. I mean, they stood by me like a rock solid wall which cannot be broken even by an atom bomb. माशाल्लाह, दिस टेल्स अस कि कितना इम्पोर्टेंट है एक सोर्स ऑफ सपोर्ट का होना, आपकी Yes, फैमिली का आपके साथ होना, क्योंकि इट्स नॉट एन इजी थिंग। कैंसर से डायग्नोज हो जाना कोई भी नहीं सोचता, एंड देन ट्रीटमेंट की तरफ आना, इट्स नॉट एन इजी थिंग। तो उसके लिए not कितना at all. इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक सपोर्ट हो। तो True, very ट्रीटमेंट की तरफ आते हुए मैं जानना चाहूंगी कि ट्रीटमेंट पर भी काफ़ी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। ट्रीटमेंट करवाना और उस प्रोसेस में क्या मुश्किलात थी? सबसे पहली मुश्किल जो थी वो तो ये थी कि सिंस आई वाज डायग्नोस्ड एट फोर्थ स्टेज, तो नॉट इट वाजंट, आई मीन द इनिशियल थॉट जो है ना, देखिए ये जो द वर्ड कैंसर ना, इट्स नोन एज साइलेंट किलर। हम्म। और आई मीन इट लिटरली मेक्स यू के यू डन। और व्हेन यू नो के आई एम सॉरी, व्हेन यू नो के you diag you diagnosed at fourth stage, things are not easy at all. I was twice rejected by a very by one of the main hospitals in Lahore. Uh, I went to the walk-ins twice, or they said कि नहीं हम we are sorry we can't treat. फिर through one of my uncles, I came to know about a hospital, cancer care hospital, or before that I never knew about it. So the dean was a very close friend of my uncle. So he said ke don't worry, I'll take we'll get it sorted, don't worry. So it took like a day or two to arrange a meeting, or we got the appointment, went there, or they examined me, and we had all the they made all the plan के कितने सेशंस होंगे, रेडिएशन, they told me, उन्होंने बड़ा मुझे बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया मुझे। अच्छा, अब यहाँ पे ना they gave me so much hope कि कोई बात नहीं, so what, it happens, don't worry, it happens. I mean, अब मैं कुछ होपफुल हुआ, मैं कहा नहीं, कुछ हो सकता है। दूर से ना एक लाइट सी नजर आई कि नहीं, रोशनी है। सो वंस वी वर डन विद द ब्रीफिंग के सर्जरी होगी, रेडिएशन होगी, सेशंस हो, कीमोथेरेपी के सेशंस होंगे, और उसके बाद सारा प्लान जब हो गया एंड वी वर अबाउट टू लीव, तो he called me back and said यार के I would suggest के although we have made all the plans, लेकिन I would suggest you के there's a doctor who is he's my batchmate, लेकिन he's a way much better doctor than me. So I would suggest you to go for a second opinion. Ab, I mean, the kind of straight we all were, me and my family, we didn't hesitate and said, "Okay, sure thing, we'll get the second opinion." So he referred me to General Retired Naeem Naqi. He's a very famous oncologist in Lahore. I'm naming him because there's a specific reason behind this. Otherwise, I wouldn't have taken the name. The next day, we took an appointment. The next day, we went to see the General Naqi. Uh, now, Fizza, the moment I stepped into the room and I had my first look on General Naqi, I was like, wow. I mean, he had such an aura. Second, the moment he started speaking, initially, the moment he addressed me, initially, I had thought I'm in safe hands. Now I thought, वो जो इफेक्ट था ना डॉक्टर का, आई मीन, देखो कैंसर के अंदर ना टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग डायग्नोज्ड एट द राइट टाइम एंड getting a good doctor. I mean, these two are very necessary. We had a very detailed session, or he gave me so much up. Okay, come on, yaar, you're a young man. Don't give up.
this is nothing. I know you. I mean, he asked me, what do I do, Sara? So asked me about my profession. I said, yeah, you are already well aware of this, so you don't need to worry about anything. Just hang in there, or don't worry. We'll start the treatment in like 2 or 3 days, or you'll be perfectly all right.